Today we're going to learn 20 new Urdu adjectives with a Pakistan drama called Kabhi Main Kabhi Tum. Hello, how are you all doing, everyone? My name is Sara, and on this channel, I teach Urdu as a second language. Today is a very special lesson. I was watching this drama called Kabhi Main Kabhi Tum to find out some colloquial verbs and compile them for you. And I noticed they're using a lot of adjectives. So I thought I'll compile 20 adjectives and I'll give you some clips from the drama so you can learn it and have some fun with it as well. All of these adjectives are used pretty commonly in everyday life. And if you want to learn the grammar of the adjectives, I made special videos and I'll link them somewhere here. So without further ado, let's get started. We'll watch the clip and see the adjective being used. So the first adjective is ghair zimedar. Ghair zimedar. Ghair zimedar is someone who is irresponsible. He is a very irresponsible guy. वो बहुत गैर जिम्मेदार लड़का है. Now let's see the clip. तो केटरिंग का क्या किया? मुस्तफ़ा को बोल. मुस्तफा को आपने क्या है, आपको समझ में नहीं आ रहा है? मुस्तफा को जिम्मेदारी देने का है ये काम. पहले इतना गैर जिम्मेदार लड़का है, उसका क्या पता, कोई भरोसा नहीं उसका, कोई काम कर ले वो. Our second adjective is awara gard. You'll see a lot of adjectives being used in the sentences which are not nice. So basically this drama is very engrossing. Parents compare their two sons a lot. One is a very responsible, very decent and very high achieving guy, whereas the other one, they kind of overlook all his talents because he's a freelancer and a game developer, and he usually stays always on the computer. So they kind of overlook all his talents and his hard work and use very negative sentences for him. I highly recommend this drama. It's really nice and the acting is really good as well. I'll link the episodes in the link in the description box. So the adjective here is awara gard, someone who is kind of a gypsy, someone who wanders here and there aimlessly, someone who is just always outside. मैं आवारा गर्द हूँ. I'm always outside, wandering aimlessly without any intention, kind of like a gypsy. Awara gard is a negative word that means someone who is not very hardworking and someone who doesn't have any ambition or determination. Let's see the clip. उठते ही चले गए थे, सुबह उठते ही चले गए थे मुस्तफा भाई. जहाँ हस्बे आदत, वो घर में टिकता कहाँ है? वो आवारागर्द गैर जिम्मेदार लड़का फिर रहा होगा कहीं. So the next adjective is very important because I'll tell you like 4 to 5 different meanings of it. It's used very commonly, it's very colloquial. The verb is tez. Tez means fast. Tez. Now, like I'll teach you many meanings of this. First meaning I told you is tez, which is fast. वो गाड़ी तेज है. The car is fast. वो गाड़ी तेज है. Now the meaning changes when the subject changes. For example, when you're talking about a moving vehicle, you'll say tez as fast. But when you say it for a person, वो लड़की तेज है. वो लड़की तेज है. That means she's a conniving, cunning, clever girl. So sometimes it has a negative connotation and sometimes it has a positive connotation. Depends on the context. So वो लड़की तेज है, she can be conniving, cunning, but you can also say मेरी बच्ची बहुत तेज है. मेरी बच्ची maths में बहुत तेज है. My daughter is very smart in maths. मेरी बच्ची means my daughter. Maths में, in maths, बहुत तेज है. She's very cunning. She's very smart. She can learn very quickly. She's a quick learner. Now, when it's said about the food, like masala बहुत तेज है. Masala is spices. Masala बहुत तेज है. Like the spices are spicing. Like it's very spicy. Masala बहुत तेज है. इस खाने में मसाला बहुत तेज है. It's so spicy. मिर्चें तेज हैं. Like spices are kind of burning my mouth. Spices are masala
तेज़ है, मिर्चें तेज़ हैं. So when you're talking about food, मिर्चें तेज़ हैं, मसाला तेज़ है. You can also say it for the weather. धूप तेज़ है, धूप बहुत तेज़ है. Sunlight is so sharp, like it's very very bright. It's kind of scorching. धूप बहुत तेज़ है, बाहर धूप बहुत तेज़ है, मैं नहीं जा रही. बाहर धूप बहुत तेज़ है, मैं नहीं जा रही. I'm not going. Let's see the clip now. वो जितना आवारा लगता है ना तुझे, दिमाग से उतना ही तेज़ है. और ये टेक्नोलॉजी ना, इसका पहला प्यार है. और ये जो कंप्यूटर है, ये उसकी एक्स है. ये बोर्ड पे जिस तरीके से ये हाथ चलाता है, ऐसा लगता है ना उस्ताद जी अपने हारमोनियम पे हाथ चला रहे हैं. मुरझाया हुआ means wilting. मेरा पौधा मुरझाया हुआ है. My plant is wilting. मुरझाया हुआ. But you can say that about a person as well, like someone who's off, who's down, who's sad, who's not as engaging, as lively as he is or she is. So तुम बहुत मुरझाए हुए हो आजकल. You're very down nowadays. तुम बहुत मुरझाए हुए हो आजकल. Like your face is very tired and down nowadays. Let's see the clip. ये भैया तो बहुत ही मुरझाया हुआ रंग है. तुम अपनी उम्र के मुताबिक कोई लाल लो, कोई नीला सूट पहनो, कोई पीला पहनो. ये तो सच बात है कि मैं भी ना पहनूं. The next word is also very common and something you've probably never heard before, because all of these adjectives are quite new. I've never used them in any of my other videos. Hassas. Hassas means sensitive. वो मेरी हसास बेटी है. वो मेरी हसास बेटी है. She is my sensitive daughter. वो मेरी हसास बेटी है. वो बहुत हसास है, उसके सामने ये नहीं बोलना. वो बहुत हसास है. He or she is very sensitive. वो बहुत हसास है, उसके सामने ये नहीं बोलना. So उसके सामने means in front of him or her. नहीं बोलना. Don't say. So it's a command. You can use the whole verb as a command as well. Don't say it in front of her or him. Let's see the clip. मुझे ज़िंदगी में जो भी चाहिए था आपने मुझे दिया है. मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है. इतनी अच्छी एजुकेशन दिलवाई है. मुझे आपसे दुआओं के अलावा और कुछ नहीं चाहिए. ओ मेरी शहजादी, मेरी हसास बेटी, दुनियादारी भी कोई चीज़ होती है. अब देखो ना, एक बेटी को मैं इतना कुछ दे रहा हूँ और दूसरी. If you're appreciating this video and you're appreciating my hard work, and it takes a lot of hard work, you can also become a patron and support me. The link is in the description box. Samajhdar is smart, someone who is wise, who is responsible, sensible. उनका बड़ा बेटा बहुत समझदार है. उनका बड़ा बेटा बहुत समझदार है. The older son is very wise, is very sensible, is very responsible. Next one is आम, ordinary, mediocre. मेरे दिन बहुत आम गुजर रहे हैं. आज मेरा बहुत आम सा दिन था. Today is very normal day for me. आज का दिन बहुत आम सा दिन था. आज का दिन means day, today. आज का दिन, today's day. आज का दिन बहुत आम सा दिन था. आम सा is kind of adding a nuanced meaning, like a subtle meaning. आम सा दिन था. It was a very ordinary day. उसे कोई रिश्ता पसंद ही नहीं आता था. कितने अच्छे अच्छे रिश्ते उसने इनकार किए. देखो सलमा, मैंने तुम्हें एक दो बार पहले भी बताया है कि जो हमारी बेटी है ना शर्जीना, ये आम लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ है. हाँ. उसे अपने हम उम्र गैर जिम्मेदार लापरवाह से लड़के बिल्कुल भी समझ में नहीं आते. Now let's use the next word, which is laparwa. Laparwa is someone who is not responsible. The parents are really bad here in this drama, and they're always comparing and always downgrading their son. The parents are very unaware and kind of delusional. ये बताएं मुझे कि ये किधर है मुस्तफ़ा, नजर क्यों नहीं आ रहा?
अरे कहाँ नजर आएगा, अपने आवारागर्द दोस्तों के साथ घूम फिर रहा होगा, आवारागर्दी कर रहा होगा। सब तुम्हारी माँ के लाड प्यार करना चाहिए। Next one is हम उम्र, which is the same age. वो हम उम्र है, वो मेरा हम उम्र है. We are the same age. वो मेरा हम उम्र है. He is the same age. हम उम्र. इसे चाहिए एक जिम्मेदार मैच्योर शख्स जो इसकी जिंदगी का साथी बने। अल्लाह बड़ा कारसाज है, कैसे अपनी बंदों की सुनता है। Zimmedar is responsible. If you see this drama, you'll see this guy is very narcissistic and very, very arrogant and self-centered. But the parents are so in love with this child. They're always kind of praising him and always saying good words and singing his praises. So Zimmedar is responsible. Let's see the clip. इसे चाहिए एक जिम्मेदार मैच्योर शख्स जो इसकी जिंदगी का साथी बने। Another good word being used for him is कामयाब. कामयाब is successful. वो बहुत कामयाब है. He's very successful. This is the other word that's being used for him. काबिल. काबिल. काबिल is competent. काबिल. वो काबिल है, वो बहुत काबिल है, वो बहुत ज़बरदस्त और काबिल है. ज़बरदस्त is awesome. It's an adjective that's been used very often. ज़बरदस्त, वो बहुत काबिल और ज़बरदस्त है. पढ़ा लिखा. पढ़ा लिखा means someone who's well educated. वो बहुत पढ़ा लिखा इंसान है. He's a very well educated guy or a human. इंसान is a human. तुम्हें क्या लगता है शादी के बाद मेरी और अदील की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ना? क्यों नहीं होगी भाई, जरूर होगी. परफेक्ट कपल हो तुम दोनों, एक दूसरे के साथ 100% कंपैटिबल. जितने बड़े बड़े ऊंचे ख्वाब थे तुम्हारे, लड़का कामयाब हो, काबिल हो, पढ़ा लिखा हो, सब अदील भाई के साथ की सूरत में पूरे हो गए. सही कह रही हूँ. और नहीं तो भाई, हर लड़की का अपना आइडियल होता है. Now let's see the next adjective, which is dramebaz. Dramebaz is someone who is very extra, very dramatic. Oh, मेरी दोस्त बहुत ड्रामेबाज है. You can see that I'm trying to use very simple sentences because I'm trying to make it okay for beginner level students as well. Now let's see the clip. तमाम रिश्तों को रिजेक्ट करती हुई हमारी हीरोइन उस मिस्टर परफेक्ट को हाँ कर देती है. यूं चट मंगनी और पट ब्याह की बात छिड़ जाती है. वाह, ये ड्रामेबाज हो तो. The next one is kamchor. Kamchor. Kamchor is lazy, someone who runs away from work. Another verb or synonym is sust. Sust and kahil. Both of these words are lazy. वो बहुत सुस्त और काहिल है, वो बहुत कामचोर है. वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो. वही आपकी चाय और न्यूज़पेपर. बाबा की आदतें बिगाड़ के जा रही हो. हाँ, अब मुझे कौन सुबह सुबह बेड टी और अखबार दिया करेगा? रामीन है ना, वो देगी. आह, रामीन वो कहाँ देगी? एक नंबर की कामचोर है वो. मेरी भी नहीं है. कमज़ोर. कमज़ोर इज़ वीक. खाती पीती नहीं है तो वो कमज़ोर है. वो खाती पीती नहीं है. शी डजंट ईट एंड ड्रिंक दैट मच. वो कमज़ोर है. शी इज़ वीक. You can use it for willpower as well, or like a stamina. मैं अब्बा के साथ हूँ ना, अभी तुझे करता हूँ. किसका फोन? अम्मी का फोन था. वो कह रही थी कि अपने अब्बू से कहना कि वो ड्राई फ्रूट लें, अपने लिए कमजोर बहुत हो गए, ले लीजिएगा. जानता हूँ किस अम्मी का फोन था. Very important adjective is प्यारी. वो बहुत प्यारा बच्चा है. Here the प्यारा is used as good, very nice, very obedient. वो बहुत प्यारा बच्चा है. The actual word means pretty, but here it's been used as good or obedient or very, very tame. चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरी जान. जीते रहो, सलामत रहो मेरे बच्चे. ओके, खुदा हाफिज. अच्छा, खुदा हाफिज. अल्लाह इसे जिंदगी भर खुशियां नसीब करे. बहुत प्यारा बेटा है.
वालेकुम सलाम इफ्तिखार भाई, क्या हाल है? खैरियत Now से? teach you two bonus adjectives which are khubsurat, very commonly used, and aqlmand. Khubsurat means beautiful. Khub means nice, good, and surat is face. Khubsurat means nice face, and aqlmand means intelligent. Aqlmand. All of these adjectives are used by parents for their children. So, मेरी बिल्ली बहुत अक्लमंद है. मेरी बिल्ली बहुत अक्लमंद है. My cat is very intelligent. I had two cats. One's name is Cookie and the other one is Zuko from Airbender, The Last Airbender. And Cookie was quite dumb, but Zuko is quite intelligent. Zuko बहुत अक्लमंद है. That is it, guys. I hope you have learned a lot and you enjoyed the clips that I've taken from this drama. I will definitely recommend this drama. If you have seen it, do let me know in the comment section. I actually started watching it yesterday and I got hooked and I started watching all the episodes, and now I'm very sleep deprived and I'm very, very tired. But I have a full day of lessons. I do private lessons as well on these websites, Preply, italki, and Verbling. If you want a private lesson, you can always reach out on these websites. This is the question I usually ask my students when I'm taking lessons and when I'm specifically teaching adjectives. I tell them, or I ask them, tell me an adjective that defines you. For example, for me, I would say मैं बहुत मेहनती हूँ. मेहनती is hardworking. मैं बहुत मेहनती हूँ. मैं बहुत बहादुर हूँ. बहादुर is brave. मैं बहुत adventurous हूँ. यानी adventurous in Urdu, you'll just say adventurous most of the time, colloquially. But an actual word is मुहिमजोई की शौकीन. मैं बहुत मुहिमजोई की शौकीन हूँ. I'm very adventurous. मैं बहुत adventurous हूँ. A lot of times we use a lot of English words in Urdu and that's quite common. So don't get offended if you're learning literal Urdu. I will see you guys next week and have a really lovely day. Goodbye.